हेलो जी. आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विथ वन ऑफ माई मेंटीज एंड ही हैड मेड अ प्लान कि वो 7 दिन के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करेगा विच इज अकाउंट्स ऑफ CA फाइनल FR. And for 4 days he studied really well. He studied 10 hours, 12 hours a day and he was able to finish 60% of the syllabus. On the 5th day, however, वो पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, बैठ भी रहा था, उसकी इच्छा भी थी पढ़ने की, बट ही वॉज नॉट एबल टू ऑब्जॉर्व एनी ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन. ही वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. अच्छा, उस वजह से उसने वो पूरा 5th डे वेस्ट कर दिया. एंड देन ही वॉज हैविंग रियली नेगेटिव थॉट्स बिकॉज ऑफ दैट वेस्टेड डे. He was having really depressing thoughts about his examination, possibilities of passing, etc. And I think ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है, so that is why it's important to address why this happens. At this point when you're preparing for your exam, you can't be just relying on your willpower. Willpower is extremely important. Setting deadlines is also extremely important. You have limited time, you should have deadlines, you should try extremely hard and match those deadlines. बट एक पॉइंट के बाद ना विल पावर काम नहीं करता. एक पॉइंट के बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉडी एंड योर माइंड नीड्स. अगर आप एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली करते जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है वो एक ही तरीके से चलते चलते. इट्स जस्ट लाइक हाउ एट योर होम इफ आई गिव यू योर मोस्ट फेवरेट स्वीट डिश और फूड एंड आई गिव यू दैट 3 times a day कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे. आफ्टर 3 days 4 days आप थक जाएंगे, आप पक जाएंगे, आपको वो नहीं खाना होगा. योर बॉडी इज गोइंग टू बी सैचुरेटेड. ओके, सो इट्स द सेम विद द माइंड ऑल्सो. और इस चीज़ का एटलीस्ट मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कहीं पे मैंने कोई सोल्यूशन नहीं देखा एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू हैव टू स्विच द सब्जेक्ट. If you feel that you are exhausted reading the same subject over and over again, you have to understand what your mind and your body wants and you have to change the subject. So that's what I told the student also, that he needs to switch the subject. हाँ, उसने 7 दिन का डेडलाइन रखा था, 4 दिन हो गए. He still had 3 days, so he has to note down that 3 दिन बचे हैं and accordingly he has to note down how many chapters he has finished, how many chapters more he has to finish, मार्किंग करके रख देने का and then बाद में आने का उसके ऊपर. Meanwhile, he can do law. Meanwhile, he can do audit. Meanwhile, he can do any other subject. Another thing is, which is a popular myth actually, that you have to sit for 2 hours, 3 hours at a stretch when you're studying for your exam. Honestly speaking, not a lot of people have that much capacity. And it's okay. It's absolutely okay. At a stretch, 2-3 घंटा बैठना is not necessary. Our goal should be to optimize our productivity in the limited time that we have. अब सबके पास 24 घंटे हैं, एक दिन में आपको 10 घंटे पढ़ना है, पर वो 10 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना जरूरी नहीं है. इफ यू आर एबल टू सिट फॉर 40 minutes प्रोडक्टिवली एंड देन आफ्टर दैट आप पढ़ने की कोशिश करते हैं पर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, यू आर फीलिंग लेथार्जिक और यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, इट्स ओके. पुश योरसेल्फ फॉर 5 minutes, 10 minutes, but then after that take 5-10 minutes break. After that break, when you come back and you study again, you will feel refreshed and you will want to study. So breaks at regular intervals is important. जबरदस्ती ड्रैग करना 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने का when your output is actually coming for just half an hour or 40 minutes, it's a waste of time and you're basically burning yourself out. और फिर जब वो आउटपुट नहीं निकलता तो एक्चुअली डिप्रेशन भी होता है, सैड भी लगता है, बहुत खराब भी लगता है क्योंकि हम बैठे तो हैं बट पढ़ाई नहीं हुई है. आप 10 सेशंस में बैठिए पूरे दिन में, बट ऑल इन ऑल आपका आउटपुट जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं इट शुड be maximum versus you're sitting for 10 hours, you're sitting for 3 hour sessions but output नहीं निकल रहा. What's even the point? आपको कस्टमाइज्ड आपके तरीके से पढ़ना है. यू हैव टू लिसन टू योर माइंड एंड बॉडी एंड अकॉर्डिंगली क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी. यू डोंट हैव टू कॉपी समवन एल्स बिकॉज समथिंग विच इज वर्किंग फॉर समवन एल्स माइट नॉट वर्क फॉर यू एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके. कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दिन के टाइम इन द आफ्टरनून दे फील लेजी, लेथार्जिक, स्लीपी, देयर आउटपुट इज नॉट दैट ग्रेट. So if this is happening with you also, you have to see why it is happening. Maybe before that you've just had a heavy meal, heavy carbohydrate meal. Maybe आपने बहुत सारा राइस खा लिया है, बहुत सारी रोटी खा ली है. In that case, your entire body's energy is going to go in digesting that food instead of focusing on the study. So in such a situation, please avoid eating heavy food. Rather, आप अपने आप को थोड़ा सा भूखा ही रखिए. Don't eat entirely. Eat only 3/4 of what you actually need so that slightly you're hungry. आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे. ठीक है. फॉर सम स्टूडेंट्स दे आर नाइट आउल्स, फॉर सम स्टूडेंट्स दे आर अर्ली बर्ड्स. यू हैव टू सी व्हाट टाइम यू आर मोस्ट इफेक्टिव. व्हेन यू आर मोस्ट इफेक्टिव इट कुड बी अर्ली मॉर्निंग फॉर समबडी एंड इट कुड बी लेट नाइट फॉर समबडी. इट्स एब्सोल्युटली ओके. यू डोंट हैव टू कॉपी समवन एल्सेस टाइमिंग्स. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे डोंट टेक अ शावर ऑन अ रेगुलर बेसिस. नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट डज अफेक्ट योर ओवरऑल एनर्जी लेवल्स एंड योर फोकस. बिना शावर लिए यू फील काइंड ऑफ हैवी and you carry those bad negative energies from your last few days.
versus अगर आपने फटाफट से if you take a shower, you will feel relaxed, fresh, and you'll be able to focus better. Okay, so you have to see these small basic things which maximize your overall body's and your mind's capacity to study. Don't just rely on willpower. Be very aware of how you're feeling and how your study is going, and accordingly adapt your strategy.